If we talk about performance electric sedans, you get quite a few options in the Indian market. And now Tesla is also planning to enter the Indian market. Do you think Tesla is late to the party? So we have got one of our experts who has driven a few Teslas, and Somnath, I want to know, is Tesla late to the party? Because look at these machines. You get everything now in Indian market, और जब तक टेस्ला इंडिया में खुद को एस्टैब्लिश करेगा तब तक हमारे पास और अच्छे ऑप्शंस आ जाएंगे। भाई पहली बात, पार्टी तो शुरू हो चुकी है, नो डाउट अबाउट इट, मगर टेस्ला इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंडर, क्योंकि आजकल लोग जो है टेस्ला को क्रेडिट कम देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की जो ट्रेंड, जो सेगमेंट, आई थिंक टेस्ला हैज़ टू बी क्रेडिटेड फॉर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक कार ट्रेंड्स। आजकल जो गाड़ियों में ट्रेंड दिख रहा है, स्क्रीन इतना बड़ा, बटन नहीं है, वो टेस्ला ने ही शुरू किया था। तो यू हैव टू गिव क्रेडिट वेर इट्स ड्यू टू टेस्ला। एंड येस, आई हैव ड्रिवन अ फ्यू टेस्लाज अब्रॉड, इंडिया में भी चला है, बट आई वॉन्ट रियली गेट इन टू डिटेल्स हाउ एंड वॉट, बट ये ज़रूर कहूँगा कि भाई टेस्ला इज़ डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर। हाउएवर, आई ऑल्सो से दैट यू गेट सम रियली गुड कार्स दैट आर ऑल्सो टेस्ला कंपेटिटिव, क्योंकि ग्लोबली भी अब देख सकते हैं BMW and BYD are catching up and they are doing really well in terms of EV sales. Luxury EV segment में BMW number 1, and of course EVs में you have to talk about BYD. कुछ साल पहले या काफ़ी साल पहले you would have never heard of BYD. However, now they are everywhere and they are launching one product after another. तो Tesla की competition काफ़ी बढ़ चुकी है, but they are coming to India, and today we are going to talk about how they are to drive and what are the expectations and what sort of pricing that you will, क्योंकि काफ़ी गलत फहमियाँ इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इज़ व्हाट आई फील। वो सारी गलत फहमियाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रही हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, इंडिया में BYD इज़ ऑलरेडी देयर, टेस्ला इज़ येट टू कम। सो विल इट फेस अ वेरी फियर्स कॉम्पिटिशन? कॉज BYD जैसे ही देखेगा कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है, दे विल ऑल्सो गेट वेरी एग्रेसिव विद देयर कार लॉन्चेस। कार मेकर्स के लिए आपको सोचना पड़ेगा, कार मेकर के दिमाग में मार्केट्स क्या है जो पॉपुलर है। चाइना वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड चाइना इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर टेस्ला। आई मीन यूरोप में एंड ग्लोबली टेस्ला इज स्टिल द मॉडल वाई इज द बेस्ट सेलिंग कार इन द वर्ल्ड. You cannot, it's a very big statement. I mean, when you surprise Toyota and some of the other, Model Y is a hugely popular car. However, BYD is catching up, no doubt about it. And of late reasons ये है कि Tesla I feel is not a regular car company. देखिए वो advertise नहीं करती, advertising वो नहीं करते. Typical क्योंकि उनकी CEO अगर आप बात this Tesla is all about one man and that we all know who it is. And the way they run, the way they think is very different. And but they are catching up. They have just unveiled a new Model Y, and they have always been very good cars. But in terms of competition, definitely competition has caught up. There is no doubt about that. Moreover, there's a very big confusion regarding the pricing of Tesla. कोई कह रहा है 25 लाख की आएगी, कोई कह रहा है 30 लाख की आएगी. तो मतलब what is the price range we can expect those cars to be? ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है. एंड आई ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एंड लोग काफ़ी उत्साहित है लोग कि भाई मैं टेस्ला लूँगा 15-20 लाख रुपए का. तो मैं ये गलत फहमी दूर कर दूँ. टेस्ला एटलीस्ट अभी जो प्रोडक्ट्स है दे डोंट मेक अफोर्डेबल कार्स, दे मेक कार्स विच राइवल दीज कार्स. हाई एंड प्रीमियम कार्स, सबसे सस्ती मॉडल 3 जो है उनकी सबसे अफोर्डेबल मॉडल है, दैट इज स्टिल गोइंग टू बी मिनिमम. अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी भी हटा दे, सब कुछ कर दे, 40-50 लाख को तो होना चाहिए. आई फील लुकिंग एट द करंट स्ट्रक्चर, येस इफ दे मेक इन इंडिया, इफ दे लॉन्च अनदर अफोर्डेबल मॉडल, मे बी येस, बट एट द मोमेंट there is no affordable Tesla. But again, 40-50 lakh is also very good pricing. I think Tesla will do decent numbers, but affordable in a way competition to the Mahindra EVs या some of the other EVs, no. Tesla, I don't think so. Tesla will make affordable EVs. They are a very premium car company, and at the moment I don't see anything below a Model 3 which is a very premium car. So pricing में minimum 50 lakhs you have to pay, even more actually, because we don't know the import duty cut and what they are going to do. If they bring it by imported route, it is going to be expensive. So let me put you in a little confusing situation. You have driven a few Teslas. Yeah. You have driven the BYD cars. What do you think? Which is better in terms of performance and quality and everything? देखिए टेस्ला मैंने अब्रॉड चला है. आई हैव नॉट ड्रिवन इट
ज़्यादा नहीं चला है. I've driven it abroad and I would love to drive it in India properly. ये ज़रूर कहूँगा कि BYD has caught up, no doubt about it. अभी in terms of quality BYD is excellent. The seal जो है, I mean 50 लाख में आपको इतना performance मिलता है, आपको और कुछ नहीं चाहिए if you want an EV, honestly. Tesla where it scores is the network, is the supercharger network जो global markets में, that is a big USP. The performance and the range is even better. Range Tesla cars is superb. So they are focused on tech. जो infotainment में जो features मिलते हैं, आप कभी सोच नहीं सकते गाड़ियों में इतनी features हो सकती है. The screen is huge. It was one of the best screens that I've used. You also got like dog modes and everything. Yeah, you so can keep your pet. They think of some stuff which you never even imagined. So उन सब चीज़ों में software, tech, range, the supercharger network, and all that Tesla has it. Plus there's the image. So Tesla has many USPs, but BYD seal is also very good car. So I would say abhi 50-50. It depends on each model. There are some cars which Tesla makes really well, जो BYD इतनी अच्छी नहीं बनाती. But again, BYD has a lot more products as well. But the biggest USP about Tesla is autonomous driving feature they come with. Will it be like successful in India? Cause यहाँ पे तो कुत्ते, गाय, बैल कुछ भी सड़क पे आ जाता है. I don't think so. I think autopilot is a tech that works very well in US and even in Europe in some places. गुड़गांव से दिल्ली तो नहीं कर पाओगे आप उसमें. नहीं वो तो I think it depends on how they get these cars homologated. I don't think so. You'll find these features in India spec. So there's a few piece of information I want to share. Tesla इंडिया में जब आएगी तो वो CKD रूट के थ्रू नहीं आएगी इनिशियली. बाद में अगर वो प्लान करते हैं अपने प्लांट्स लगाने का, then you'll get those cars at a cheaper price tag, which I guess BMW is also doing right now. They are trying to locally assemble. They have the X1 long wheelbase in 49 lakh में. Yeah, Fortuner से भी सस्ती है और क्या चाहिए. So at some point of time Tesla also need to locally assemble their cars to make them more accessible to the Indian audience. I think अगर आपको profit करना है, अगर आपको Indian market में establish करना है, I think yes. But again, Tesla का अलग होगा कि they just want to be a premium player. You can still do well. I mean BYD, they are importing cars, but look at the pricing. They are also doing really well. I mean in terms of the numbers, they are not looking at volume. So they are also Tesla can look at that also. और Tesla का जो image है, I think a lot of sort of premium segment buyers will go to that car maker. So they could look at that also. I mean, and if I talk about the performance of Tesla cars, which car is in Indian market, what are the other options it'll directly compete with in terms of that performance number? I think जो गाड़ियाँ हम साथ में खड़े, I think these are the best cars क्योंकि Tesla obviously come in single and dual motor long range also. मैंने long range चलाया है, very fast, range is superb, lot of tech as you don't need to honestly drive it also. इतना जो tech आ चुका है. So I think the BYD is the direct rival. But again, high-end BMW EVs and Mercedes EVs, they are looking at that segment. I think the sub 1 crore, 40 to 1 crore segment is where I think Tesla will I think do. Because top-end Model 3, I think शायद वो 80 के range हो जाएगा. Is there anything you didn't like about Tesla cars in specific when you drive it? In terms of performance, you felt like there's something which is lacking? I don't think so. Performance, honestly, performance was shocking. But आजकल electric cars में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक सो और कुछ सही, क्योंकि ये एक फैमिली लग्जरी एसयूवी, आपको इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए. बट दे आर री परफॉर्मेंस. बट अगेन आई डिड नॉट ड्राइव द प्लेड, आई थिंक द रियली फास्ट, दैट्स तो लाइक अनदर लीग. यू आई वोंट टॉक अबाउट दैट. व्हाट आई विल से इज दैट टेस्ला कार्स में देयर इज टू मच, आई वुड से फ्यूचरिस्टिक, लाइक आपको बटन्स ही नहीं मिलते. मुझे थोड़ा गेट यूज टू होना पड़ा जब मैंने टेस्ला में पहली बार बैठा था. वो बटन्स नहीं होते, इंडिकेटर के अलग होते हैं, सब कुछ अलग है. एंड देयर इज टू मच एम्फेसिस ऑन टेक. सो एंड इन सम प्लेसेस आई वुड से बिट मोर स्पेस, द राइड क्वालिटी यू नो इज अ बिट फर्म, very few near and dear thing. But again, largely tech. Tesla is a tech company. I think it's more tuned towards software, towards performance. They are a different sort of more than these legacy players, which more concentrated towards a typical car. Like BMW is about handling. Tesla, I think, more talks about the tech, like the net. I think providing better driving experience. Yeah, but again, Tesla is also very good. I mean, in terms of outright power, Tesla is very good over there also. I guess we had a long conversation about Tesla. बाकी हम बात करेंगे जब हम सही में टेस्ला चलाएंगे इंडिया के अंदर.
By the time, you can let us know your expectations and your favorite Tesla car in the comment section below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, know the drill. इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, and don't forget to press the bell icon to get all our future updates.